Hello students, welcome to maths class. Today we will discuss questions of exercise 1.2. Question third is prove that the greatest integer function f from r to r given by f of x equals to x is neither 1 1 nor onto, where x denotes the greatest integer less than or equals to x. f from r to r is f of x equals to x. Here function is greatest integer function. पहले हमें समझते हैं कि हम इसे राइट कैसे करेंगे. सो 2.3 के लेफ्ट साइड में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो इसका रिजल्ट होगा. 2.3 के लेफ्ट साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है 2. सो 2.3 का रिजल्ट होगा 2. 1.2 के लेफ्ट साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1. सो 1.2 का रिजल्ट होगा 1. और 1 का रिजल्ट 1 जो है यहाँ पे हमें दे रखा है x नोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x. सो 1 का रिजल्ट होगा 1 एंड 2 का रिजल्ट होगा 2. So f of 1.2 equals to 1.2 equals to 1 and f of 1.9 equals to 1.9 equals to 1 because 1.2 के लेफ्ट साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1 and 1.9 के लेफ्ट साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1. Here f of 1.2 equals to f of 1.9 but 1.2 is not equals to 1.9, so f is not 1 1. Now consider 0.6 belongs to R. So f of x equals to x is an integer. There does not exist any element x belongs to R such that f of x equals to 0.6. यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा कि हमारे पास f of x जो है वो 0.6 आएगा. So f is not onto. Therefore the greatest integer function is neither 1 1 nor onto. फोर्थ क्वेश्चन में हमें मॉडुलस फंक्शन दे रखा है. हमें ये बताना है कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो neither 1 1 nor onto. Now f from r to r is f of x equals to modulus of x equals to x if x is greater than equals to 0 minus x if x is less than 0. f of minus 1 equals to modulus of minus 1 equals to 1. f of 1 equals to modulus of 1 equals to 1. f of minus 1 equals to f of 1 but minus 1 is not equals to 1. Therefore f is not 1 1. Consider minus 1 belongs to R. f of x equals to modulus of x is non-negative. यहाँ पर अगर हम नेगेटिव वैल्यूज भी पुट करेंगे तब भी हमारे पास जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा. So there does not exist any element x in domain R such that f of x equals to modulus of x equals to minus 1. So f is not onto. Therefore the modulus function is neither 1 1 nor onto. Now fifth question is show that the signum function f from r to r given by f of x equals to 1 if x is greater than 0, 0 if x equals to 0, minus 1 if x is less than 0 is neither 1 1 nor onto. यहाँ पर x greater than 0 के लिए f of x की वैल्यू 1 है, x equals to 0 के लिए f of x की वैल्यू 0 है एंड x is less than 0 के लिए f of x minus 1 है. तो f of 1 और f of 2 के लिए हमारे पास जो जहाँ पे रिजल्ट आएगा वो 1 ही आएगा. सो f of 1 equals to f of 2 equals to 1 but 1 is not equals to 2 here, so f is not 1 1. Now f of x की only 3 वैल्यूज आ रही हैं 1 0 minus 1. For the element minus 2 in codomain R, there does not exist any x in domain R such that f of x equals to minus 2. यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा कि हमारे पास f of x जो है वो -2 आएगा. So f is not onto. Therefore the signum function is neither 1 1 nor onto. Now sixth question is let a equals to 1, 2, 3, b equals to 4, 5, 6, 7 and let f equals to 1, 4, 2, 5, 3, 6 be a function from a to b. Show that f is 1 1. हमें शो करना है कि f 1 1 है. a सेट दिया हुआ है, b सेट दिया हुआ है और फंक्शन डिफाइंड किया गया है फ्रॉम a to b. f of 1 जो है वो 4 के इक्वल है, f of 2 equals to 5, f of 3 equals to 6. Here, the images of distinct elements of A under F are distinct. Therefore, function f is 1 1. Now, seventh question, first part is f from R to R is f of x equals to 3 minus 4x. x1, x2 belongs to R such that f of x1 equals to f of x2. So, 3 minus 4x1 equals to 3 minus 4x2. It implies minus 4x1 equals to minus 4x2 and it implies x1 equals to x2. Therefore, f is 1 1. Now f of x equals to 3 minus 4x, so y equals to 3 minus 4x और x आ रहा है हमारे पास 3 minus y upon 4 in R. So f of 3 minus y upon 4 equals to 3 minus 4 into 3 minus y upon 4 equals to y. So for any real number y in R, there exists
3 minus y upon 4 in R such that f of 3 minus y upon 4 equals to y. f of 3 minus y upon 4 y के इक्वल आ रहा है, so therefore f is on to, f जो है f function is 1 1 and on to, so function f is bijective. Second is f from R to R defined by f of x equals to 1 plus x square. x1 comma x2 belongs to R such that f of x1 equals to f of x2. It implies 1 plus x1 square equals to 1 plus x2 square, and it implies x1 square equals to x2 square, and it implies x1 equals to plus minus x2. f of x1 equals to f of x2 does not imply x1 equals to x2. f of 1 equals to 2 and f of minus 1 भी 2 के इक्वल आ रहा है, but 1 is not equals to minus 1, therefore f is not 1 1. Now consider an element minus 2 in codomain R. f of x equals to 1 plus x can be positive for all x belongs to R. यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट x, कोई भी एलिमेंट जो है डोमेन R में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा कि हमारे पास f of x जो है -2 आएगा, therefore f is not on 2, therefore f is neither 1 1 nor on 2.